ऋषभ, सो वेरी वार्म वेलकम मैन। फिटनेस इंडस्ट्री में ये है कि भाई अगर मैंने आज पूरा खाना नहीं खाया तो कल मसल बनेगी। टेल अस रोडीज का एक्सपीरियंस क्या था? The best moment I remember about Roadies is giving me this watch. Roadies was like a dream come true, and it was still a dream, and yet feels like a dream. I met one friend of mine. He started me making the push-ups. रात को जैसे ही हमारा ट्रेनर खत्म होता है और हमने 8-10 रोटियां फोल्ड करके रख ली जेब में, क्योंकि पता है अभी खा लेंगे, बस ट्रेनिंग करेंगे, फिर भूख लग जाएगी रात में 12 बजे। तब क्या? अपने डेली डाइट के बारे में हमें जरा बताओ। ना मैं एग्स लेता हूँ, ना मैं चिकन लेता हूँ। शीशा तोड़ के जाता था क्योंकि अंदर की चाबी नहीं मिलती थी। चाबी किसको मिलेगी? जो सीनियर है। शीशा तोड़ के जाते? हाँ, तो मैं पत्थर फेंकता था, शीशा तोड़ता था, उसमें घुसता था पीछे से। अगर ट्रेन जैसी कोई दरवाजा खटखटा रहा, just hook it back out of the gym and go. So Nutribay has a latest launch live podcast पे we are going to do some live testing. Damn, brother, seriously, man, I would never imagine like the protein stays this. Took this Arnold's dialogue. Okay, discipline comes natural. Sacrifices of food comes natural. Because if I eat like everyone, I look like everyone. किसी भी रूम में घुस जाऊं, मुझे हमेशा से अलग दिखने की बारी वो चुल थी। लोगों को लगता है हम यहाँ आज प्रे करके भगवान से माफिया मांग लेंगे, व्रत रख लेंगे, ट्यूसडे नहीं खाएंगे, सैटरडे नहीं खाएंगे। बट जो गिफ्ट शरीर दे रखा है, जो गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट किसी को मिलता है भाई, 2 हाथ 2 पैर बहुतों पे नहीं होते, उसका तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? ऋषभ, I have to tell you that the Nutribay team today इतने ज़्यादा excited थे सब यहाँ कि आप यहाँ पर आ रहे हैं Nutribay के To Be Honest podcast के लिए. So very warm welcome man. कैसे हो आप? I am really excited to be here, you know, like even I was excited to give you guys my best because आप लोग already, you know, behind the podcast, I know how many things you have to go through. Are you really, you know, like, are you really ready for that person? What he's gonna say, what he's gonna talk? You're like all, I know the work that goes into it, and I'm gonna give my 100% to get to the audience and what you want out of me. I'm good. I'm doing good. Always ready. That's great to hear. Rishabh, before Roadies, before the cameras were rolling, before you became a public figure, मैं पूछना चाहता हूँ उससे पहले लाइफ कैसी थी? बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए because I've heard some traumatizing incidents. Just tell us a little about it. I used to be a bedwetter till class, I think class 7 or 8. 7, 8? Yeah, I was a bedwetter till class 8. मतलब 13-14 साल? Yeah. Wow. And I was like, I did not know what to do about it. I did not know how to tackle it, you know, in a way, okay, I'll be fine. But I was a kid, you know, it was in a preparatory school. And I would start off, एक matron आती थी रात में, you know, she'll wake you up for 4 to 5 times in a night. Isap, you don't do it. You don't do it. And all of that, you know, like came on because everybody else would be sleeping. And I would know, okay, I'm already so different. Why? Oh, why? The thing just went on. So till preparatory school, they keep you like they take care of you. And when you go to the high school, class 7, that's when you're on your own. On your own, yeah. Then you're on your own, you know. So I used to do that there also, and everybody got to know. Okay, you know, like I used to wet my bed when I was a kid. So when they got to know, then the bullying really started. You know, the fun. Everybody is just like making fun of you. Everybody is just already placing you out of the group. You're outcasting you. And this was a boarding school? This was a boarding school. And you're trying to stay alone because you don't want to go through that embarrassment, and everywhere you go, they look at you in a different way. So faced all that very early on, and I was like, why? And always hit back of the head that why question would get solved with time. So I kept at it, you know, like kept fighting it. And then growing up, coming out of it, I stopped drinking water. I was like, okay, fine. How do I change it? Okay, that happens. I'll stop drinking water. That's it. मतलब was there like an hour you decided कि इस घंटे के बाद मैं और पानी नहीं पीऊंगा? No, I was a kid, you know. I did not know exactly. So what I'd do is I'd just check. Because till 5 to 6, you're playing basketball. You have to drink water. You're उसके बाद पानी पीना पड़ेगा. Exactly. So 5 o'clock, I started. Yet, that happened. I still peed. 4 o'clock, stiff. 3 o'clock, stiff. So I was like, lunch के बाद नहीं पीना पानी. Wow. If you have to really stop this.
stopped at 2 o'clock, stopped drinking water after 2 o'clock, played basketball, this, that, was dying to drink water, but took few sips and then forced myself to pee before bed. Dinner, pee kuch bhi nahi. I was like, dinner mein aisa nahi khana, kuch se bhook lagi, pyas lagi, sorry. So I would stop that, and then I realized that I have to battle it on my own. And then it stopped happening. I was naturally out of water so much that I did not pee. I stopped it. And then धीरे when my body starts to understand in class 8 end तक जाके, I reduce the number of hours. I 4 बजे भी पी लेता हूँ. Like came out natural 6 weeks. Till today, I'll tell you what, I wake up in the middle of the night at 4 o'clock. If I'm sweaty, I'd get confused. Till today, I'm thorough. You know what? You would get confused whether it's sweat or pee. Yeah. Till today, I feel it because the trauma is bad. I know अगर school में वो हो गया, kids will make fun of me the whole day. They're gonna look at me different. That trauma is still there. And it's good because it helps me now. And I think nowadays, everyone should go through any trauma to make them hard, or go through a hard life, or go through a hard discipline, or parents giving them hardship early on, where they can actually learn that life is not easy. वो जब तक आप घर में रहते हो एक consigned comfort zone में, everybody is taking care of you. Once you step out, you're alone. So you talked about the bullying that was happening, peers se. How did that stop, or how did you deal with that? I think putting on a brave face was what I started initially, because I was like, okay, once I start to look like somebody, then they'll, back off. So a little bit of sports and a little bit of bodybuilding, initially early on, helped me get through it. I would go to the gym, force myself entering the gym because class 11 के बच्चे जाते थे. और आप तब कौन से क्लास में थे? And I was in class 8. अच्छा ना, Back door से I was entering, going to the gym. We had outside रात में, when the lights are off, warden is gone back to his place. You would sneak out of the bed, go to the dormitories, go to the loft, train push-ups, pull-ups on these hard wooden के rooftop पे जो लगते हैं. Oh yes. Climbing on the lockers and then doing pull-ups like that. So therefore, I was like, if I look strong, then they're going to back off a little bit. And that, persona that helped me, reading Arnold's books, Pumping Iron, watching the movie in my internet period, and all of that, that thing helped me. And then I was like, okay, then I have to be different in a way. But मुझे उस time पे नहीं था कि, like height नहीं बढ़ेगी this that. I think I never knew anything, even genetics have. So I was not that. But gym early on saved me from it. And बाद में जाके समझ में आया कि it's genetics, it's not the gym that's going to make you short. तो हमारे यहाँ पेरेंट्स के insecurities है, वो खुद लंबे नहीं है, तो वो बच्चों को भी ऐसे कहते हैं कि don't do gym because तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी. So वो insecurities अपनी बच्चों को फीड करते हैं, बच्चे करते ही नहीं भी. वो 19 साल 18 साल तक वो करा नहीं उसने, और अब जब वो 19 का हो गया, उसके टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी पीक पे, ऑलमोस्ट डाउन भी मार रहा, तब आप उसे बोल रहे हो कि अब तू कुछ भी नहीं करता, जहाँ कुछ खेला बच्चों के साथ. कैसे खेल गया वो एकदम से? तुमने उसको बोला कि पढ़, तुमने कमरों में उसे बंद रखा, अब वो कैसे खेलेगा? तुमने उसके अंदर वो डाला ही नहीं. और you were never the right role model for your kids. To teach them what to do is to do it your own self. Be the dad, be the mother that you really want your kids to become growing up. So discipline is not instilled, it's not genetic, it's what you show them. So be the right role model for them. You mentioned how sports and then the gym also helped you come out of the bullying and trauma. Tell us a little about the sporting bit, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि आपने मल्टीपल लेवल्स के स्पोर्ट्स खेले हैं. तो tell us a little about that. क्या-क्या सीखने को मिला, कितना हेल्प किया वो? So I think initially early on basketball, I remember, like I was having lunch the other day and my coach is like, he was looking for these players अपनी टीम के लिए, like हमारी टीम के लिए. House teams होती थी हमारी बास्केटबॉल की.
So हमारे हाउस में coach is like, how tall are you? I'm like this. I don't remember exactly, मुझे नहीं पता. And then they're like, ठीक है, पहुंच जा 3 मिले, lower basketball court. ठीक है, I went there. I was watching everybody play and I was like happy, like, oh shit, found something that gives me happiness. Sportsmanship, I think the seniors who were playing basketball at that time, they saw something in me कि मैं खेल रहा हूँ, अच्छा खेल रहा हूँ. I'm tall. So they would take me in my team के लंबाई ले जैसे. And then I'm playing with them. That camaraderie, that sportsmanship, that friendship, that made me grow up as a person. कि मैं कौन? So I think pushing your kids into all of these activities is very important because sports really shaped me up, in a way कि I was shocked by it कि यार कि सिर्फ 1 घंटा बास्केटबॉल खेलने से मैं स्कूल में फेमस हो जाऊंगा. क्या क्लास 8 में लोग मेरे से दूर दूर हट के चल रहे हैं, बात नहीं कर रहे, और क्लास 12 में वही बच्चे मेरी रिस्पेक्ट कर रहे डर के मारे कि मार ना दे. तो रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है? डर से. वो सीख रहा मैं स्कूल में कि मुझे अगर स्कूल में पॉपुलैरिटी चाहिए तो कैसे चाहिए, कैसे क्या करूं कि मुझे आज भी स्कूल में याद करे, क्या बुलाते, कैसे करना है, क्या खाना, क्या हाउ डू आई स्टैंड आउटसाइड. मतलब एक कॉलेज कैप्टन से भी ज़्यादा खौफ हमारा है नहीं. क्योंकि मैंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला. 3 साल के अंदर आई बिकेम द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, द मोस्ट फेमस गाय इन द स्कूल. I'm not an academic guy. I'm nothing. Good for nothing is what they said. They used to say that? Tell me a little कि जब क्लास 8 में आप स्नीकिंग करते थे जिम में, क्योंकि सिर्फ 11 को अलाउड था, क्लास 11 को. So what were the initial years of gymming and weight training like? I'm guessing PT तो ली नहीं होगी obviously. No, it's not. It was completely Self training or what? How did you self-train this? I was going to the library first and watching reading the Arnold book. I'm looking at the image that he's doing the bench press and he's on the bench, he's pushing the bench like that. Okay, how do you push up? That way. And it's just the opposite of push up. So bench press तो मैंने अपने जिम में भी देखी है. I'm going to do that. And then I'll be like, okay, yeah, well, how is doing the bicep? And in the photo, his biceps are the most famous, like the peak. So he would lift the dumbbell like that and a picture ऐसी है. तो वो फोटो देख के समझ गया कि भाई एक डंबल इस हाथ में, एक डंबल इस हाथ में. And they would even curl the wrist. Yes. That is, like I've studied, okay, do these many reps and you should train biceps like this. Sometimes you're lifting heavy, sometimes you're lifting light. I'm reading the book like a guy who would, मुझे इसका एग्जाम देना. मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि मुझे इसका एग्जाम देना. और मैं उसको ऐसे पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरा मन है उसको पढ़ने का. तो मेरे जो भी बात जा रही है वो सारी रजिस्टर हो रही है इस अलग तरीके से कि मुझे पता है कि ये मैं अभी पढ़ूंगा और मैं जिम जाऊंगा और फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. मोस्टली आई वाज डूइंग बाइसेप कर्ल्स. आई रिमेंबर मोस्टली आई वाज डूइंग बेंच प्रेस. और बैक की कोई एक्सरसाइज हमें जेन्युइन नहीं पता थी उस टाइम पे. मुझे तो पता ही नहीं थी बैक की एक्सरसाइज कोई होती है, बट हमें एक चीज़ पता थी, पुल अप. और आज भी आई थिंक इंस्टाग्राम पे आई टॉक अबाउट पुल अप सो मच. And I was telling how to do a pull-up and this, that, and that video went viral. The video went around 15 million or something like that. That pull-up वाली video, because मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस बोला कि बार को पकड़ रहा तो ऐसा सोच के तुझे उसे मोड़ना है बीच में से. You have to make a U. So when you go up, you're going to feel like that. और naturally सब लोग यही बोलते हैं, tuck your elbows in. So I was doing only pull-ups for back. I did not know that. So I would do legs. I did not know how to do a squat, but बास्केटबॉल में कोच कहता था कि आज इन्हें स्क्वाट करने. तो उठक बैठक तो वो पूरा बैठ के कर लिया, लग लिया. And then I really understood the anatomy and how to lift part of it when I actually got into fitness. I came out of college. I knew कि मुझे नहीं करना होटल management for some reason. I could not see myself 5 years down the line doing that. I could not see it. So I left it. Gone fitness completely. I was like, okay, let it go. So that was the time when I was working out and coming up and I was feeling, हाँ ये exercise ऐसे कर लेते हैं. And an internet period. You used to have this internet period. And 35 मिनट के अंदर everybody is typing or code पे something or googling something or googling or car video जो भी आई होगी recently. इतनी शेयर पढ़ के मैं क्या कर लूँ गूगल पंप पे यार. I'm watching these guys lift
then I would know shoulder press. And then Arnold se pooch lo, what's the best exercise for shoulder? He's like, dumbbell press. And I knew कि dumbbells to हैं gym में. Keep dumbbell pressing. And some things I remember in the start of it, because when I started to look good, in the mirror I could see the difference. I started to look good. Man rahi hai. So before the basketball thing, I'll just go lift a bit, see the bins a little bit, and then this half sleeves पहन के basketball के में जा रहे हैं. आप देख रही लड़कियां, हाँ? पहले नहीं देख रही थी, आप देख रही हैं. Therefore, I knew, okay, like you have to be different and you have to have some value to yourself so that somebody else looks into it and likes it. Cover page अच्छा होना चाहिए. Generally अच्छा होना चाहिए भाई. बिल्कुल वो तो होना ही चाहिए. पढ़ेगा कौन तुम्हारी book का cover page अच्छे हैं. Cover page अगर अच्छा ना हो. That's why I told you, like impress then sell your product. Otherwise, if you sell the product, be like, next. Let's talk about a major life-changing event. Before this, I'm going to stop you a little bit because there's one thing that just came into my mind. Because please, why this impression thing, I always keep saying is because sometimes you get a call from some call center and at your shop, you already know कि यार ऐसा लगा है call center से ये. But कुछ कॉल है ऐसी हो जाती है, किसी से आप बात करते हैं, it'll be like, hi, is this Rishabh? Yeah. Hi Rishabh, this is this. How are you doing? Yeah, I'm doing good. How many seconds did you get out of me? 5. And I'll be like, okay, why you stay for 5 seconds? Because you got impressed a little bit because he's asking you something and you're in your mind, you're like, what is this guy wants from me? And it's like, so this, that, and then you're like, yeah, you got 5 seconds out of me just because you impressed me with your hi, hello skills. And then you're like, oh, brother, we are coming up with this Noida property and do you want to buy this, that? But no, thank you. You got the God. अगर वो फोन उठाती बोलते था, brother, we have this amazing Noida property on here. I'm this. How are you doing? Cut the call beforehand. Impress me, then take my 5 seconds. With life, you have to impress, then sell a product. Is what. Sometimes आपको भी ऐसे कॉल आया होगा. काफी आया. So you know कि भाई मार्केटिंग वाला है, पहले पता लग जाता आप काट. But अगर वो बंदा आपसे हल्का सा बात कर ले, he got your 5 seconds. Then you never know when that 5 seconds clicks, somebody will stop. So initially impressed, that's 5 seconds. Generally, what's your favorite place for a destination, for a holiday? Brother, I'm not like the holiday kind. I swear to Acha. God. I'm the kind where the company matters. The company says, let's go there. The place will not matter. I think that I'm more or less like the guy who would be happy with the company. So sometimes they're like, okay, what's your favorite meal like? And I'll be like, okay, aisa kuch nahi hai. I can eat anything. But it has to be a good company. If you ask me to have chole bhature and cut the diet, forget everything, eat junk, I'll eat junk. But I'll make sure the company right next to me is worth it. Then I'll eat. Good one. Something that I don't want to do alone. Like I'm not the alone kind who go like, oh, well, let's try ka khana. I was like very young. Family vacation, 5-star hotel on the beach, and you can go anywhere. You can swim all the time, and then you can eat whatever you want to eat off the buffet. Life is not like that. You can just do 3 days and come back. Then what? True. You'll get happy, quick dopamine rush. And then, okay, you'll come back to home and then everything is plain and simple. Now you would hate this life. You would want to always go back to that vacation. Just understanding that there is no vacation from life is the maturity part of it. Is where I think, okay, if it's necessary to take my father or mother out, I'll take them out. But until that, I would like to enjoy the disciplined life that I have, like a structured life will get you somewhere. Is I will always play it in my head. Okay, structure है, ठीक है. हमें सुबह उठना है, करना है, फिर इस टाइम पे लंच होगा, मम्मी के साथ खा लिया, फिर इसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ काम खत्म करना है, जिम खत्म करना है, घर आना है. Then structure starts again. You shower, you eat. I'll sleep with some massager on, stretch on the bed, watch some Netflix, not on the phone with anybody. Would you wind down 10 o'clock, sleep. So you wake up fresh again, do the same routine. Day, same thing all over again. Lovely. Tell us about roadies. Tell us roadies का experience क्या था? So I think
The best moment I remember about roadies is giving me this watch. रणवीर जैसा Yes, yeah, Ranveer sir gave me this watch, and I like to wear this. I think that this is something that, you know, like I never thought. And everybody outside, and they were like, "भाई रणवीर सर ने तुझे कुछ उतार के दिया है भाई, that's the biggest thing you can ever have, because सर ने कभी किसी को कुछ दिया नहीं ऐसे." And you know, like he only gets impressed by certain caliber or level of people, and he saw that in me, because obviously, you know, like a high profile person will only recognize high value stuff. Otherwise, they'll all be like, अच्छा ठीक है, ऐसे compete करना, क्या करना, कैसे करना. So Roadies was like a dream come true, and it was still a dream, and yet it feels like a dream. It taught me that it's just started. your journey you mean It just started, brother. You just sat in the car. Somebody offered you that the whole journey is left. And like the corporate life, I was like, ab job mil gayi hai. Everyone was like, oh shit, now life is sorted. For me, ab job mil gayi hai, ab kya? So Roadies mein aa gaya, ab kya? So always that feeling of what next, what next, what next is you have to keep finding it. So Roadies was like a starting thing. Ranveer sir used to tell us, shoot के पीछे आके कि बेटा जो कर रहा है ना लाइफ में छोड़ियो मत, ये सोच के कि तूने रोडीज कर लिया हो, कुछ मत छोड़ियो, जो करता है अभी से वो करियो और ऐड कर, ऐड और कुछ और ऐड कर, अपने आप को सेल कर. Be it your Instagram, be it your business life, be it your whatever, be the own face of your own brand. कुछ भी कर, बट ये स्टार्ट है, याद रखियो. अब ये मत सोचो कि छक्का लग गया, अब मैं बैठ जाऊंगा पीछे और अब हो गया मैं रिटायर. So that's what Rudy's taught me, that this is just the start. you know I want to ask you that because you mentioned this as well कि कितना important sports और fitness ने एक रोल प्ले किया आपके लाइफ में. I want to ask you this कि sports तो था ही, बट उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? Sports के साथ I think when class 7 I started off, weight training came on like जब बास्केटबॉल खेल रहे everybody is like pushing each other, and I feel कि कुछ seniors थोड़े से ज़्यादा bulkier थे, and I would look at them like what he's doing different, you know, like they would just go to gym sometime, and I was like अगर मैं ऐसा दिख रहा हूँ तो कोई वैसे ही मेरे से पंगे नहीं लेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं डरा हुआ बहुत रहता था कि कभी भी कोई भी मुझे कुछ बोल जाए, कोई बात हो जाए, कोई मजाक मजाक में ही कोई छेड़ जाए, कोई मार दे थप्पड़. मुझे ये था कि एक पर्सोना बना के चलना कि भाई मैं ऐसा हूँ, अब नहीं हो सकता ये. So I was like, okay, now how do you get bigger? I met one friend of mine, he started making me do push-ups behind. और हम रात को जैसे ही हमारा प्रेप टाइम खत्म होता है, डिनर खत्म होता है, और हमने 8-10 रोटियां फोल्ड करके रख ली जेब में, क्योंकि पता है अभी खा लेंगे प्रेप टाइम 1 घंटे का, उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे, फिर भूख लग जाएगी रात में 12 बजे, तब क्या. सो हमारा ग्रुप था 3-4 लोगों का, वो अपने आप समझ जाएंगे जब ये वीडियो देख रहे होंगे. हम अपना प्रेप टाइम खत्म हुआ, रोल कॉल हुई, लाइट्स आउट हुई, 4 लोग निकलते थे, और जहाँ पे लॉकर के पीछे वुडन सिनेरियो ऐसे हट बनी हुई है, वहां पे लॉकर साइड है, लॉकर साइड इज लाइक 50 लॉकर्स इन अ रो, उसके पीछे एक जगह बना रखी, इट्स लाइक किसी के घर के ऊपर वाला उसके एरिया को क्या कहते हैं ब्रदर, लॉफ्ट लाइक अ लॉफ्ट. ऊपर गए, वहां पे पुशअप्स कर रहे, पुलअप्स कर रहे. कहाँ पे पुलअप्स कर रहे, जगह नहीं है पुलअप्स के लिए, बट वो जो फट्टे लग रखे हैं ना, जो हट में ऐसे लगते हैं, जो रूफ को होल्ड करते हैं. राइट वी आर क्लाइंबिंग ऑन टू लॉकर्स, और वहां पे जाके हम वी आर डूइंग पुलअप्स. आई रिमेंबर आई कुड नॉट डू पुलअप फॉर लाइक होल ईयर. एवरीबडी वुड, हमारे 4-5 लोग में वही मजाक उड़ाते थे, यार तेरे से अभी तक पुलअप नहीं हो रही, हमने कर दिए, देख चिन अप्स हो रही है, पुलअप्स नहीं हो रही, पुलअप्स क्यों नहीं हो रही. Kept at it, push-ups नहीं हो रही, kept at it, and now I remember I used to do a lot of push-ups, 75-80 push-ups एक बारी में कर देना. So I think that kids got me in this. I got crazy fanatic, started reading Arnold की books, started getting into the workout, जिम में घुस के ट्रेन कर रहा हूँ. और सबसे बड़ा जो मिथ है आज की फिटनेस इंडस्ट्री में, जो बच्चों को लगता है कि भाई you should not train, हाइट नहीं बढ़ेगी, this that. 15-16 साल के बच्चों को जस्ट गूगल कर लो, इंस्टाग्राम पे उनकी प्रोफाइल देख लो, यूएसए में एग्जैक्टली अमेरिकन किड्स 15-16 साल के जो अमेरिकन फुटबॉल खेल रहे हैं ना, वो 15-16 साल के बच्चे हैं. 24 साल का लड़का भी आज इतनी जिम करने के बाद उनसे 10% भी नहीं कर सकता एथलेटिक्स में कंपटीशन, या सिर्फ जिम में.
16-16 साल के लड़के मार रहे हैं 200-200 किलो की डेट, जो पूरी जिंदगी यहाँ बिता लेते 26-27 साल के, जो जिम रैट्स जिसे कहते हैं, वो भी नहीं मारते 200 की डेट, क्योंकि दे स्टार्ट अर्ली, दे नो दैट ये सब एक मिथ है कि हाइट नहीं बढ़ेगी, जेनेटिक्स है यार। तुम्हारे पापा मम्मी छोटे हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, वो तभी बोल रहे हैं ये मत कर ये मत कर, वैसी तेरा रास्ता छोटा, तू बढ़ेगा नहीं, ये करेगा तो फिर और तेरी हाइट चली जाएगी। उनकी इनसिक्योरिटीज है, उन्हें हटा दो और फिटनेस में घुस जाओ 14 साल के बाद। भूल जाओ कि तुम बड़े होगे नहीं होगे। एथलेटिक्स, रन, स्विम, साइकिल, जंप, प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है, डर लग रहा है तो 100 पुशअप डेली करो, 200 स्क्वाट डेली करो और 50 पुलअप डेली करो। 16 साल के हो, 15 साल के हो, डर लग रहा है नहीं बढ़ेगी हाइट, सिर्फ ये कर जाओ, सिर्फ ये कर जाओ। वेट्स मत उठाओ। वेट्स मत उठाओ। नहीं, अगर डर लग रहा है, घर वाले नहीं मना कर रहे, जा रहे ऐसे, तुम्हारे घर में नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी, डू बॉडी वेट एक्सरसाइज। कितने कर लोगे मैं बताता हूँ, इतने साल के 15 के हैं तो मैं चैलेंज है, 3 महीने 300 स्क्वाट कर लेना डेली बिन नागा, और 200 पुशअप कर लेना और 100 पुलअप कर लेना। तुमसे पुलअप नहीं हो रही, बैंड लगा लेना, वो भी काउंट कर लूंगा। 3 महीने करके देख लो, फिर तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, why am I like this? I will eat normal food and train with you next, because ये बाइसेप अभी नहीं बनी, इस बाइसेप को 17 साल हो गए, ये चेस्ट अभी नहीं बनी, इस चेस्ट को 17 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। इसलिए मैं अब अलग अलग तरीके की पुशअप्स, अलग अलग तरीके के वर्कआउट इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, स्मॉल हैक्स, जो हमें ऑलरेडी बुक्स पढ़ के समझ में आता था कि अच्छा ठीक है, अब नहीं बन रहा तो अब ये कर ले, अब ये कर ले, क्योंकि भाई 17 साल से ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ मैं। आई नीड टू डू अ डिफरेंट पुशअप एवरी टाइम आई एम डूइंग अ पुशअप, आई विल होल्ड इट। ओके ठीक है, आज सिर्फ होल्ड करूंगा, आज पुशअप्स नहीं कर रहा, सिर्फ आज पुशअप होल्ड करूंगा सिर्फ, अब देखते कितना होल्ड होता। बॉडी अपने आप ऐसे हो जाती है, योर नर्वस सिस्टम इज शॉक्ड। सो लाइक मिथ्स हैं, हाइट नहीं बढ़ेगी ये बढ़ेगी, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू आस्क्ड मी लाइक हाउ जिम हेल्प्ड मी, इट गिव मी सच अ कॉन्फिडेंस बूस्ट कि जब मैं क्लास में घुसता था ना, किसी जूनियर की किसी सीनियर की, सीनियरों की आंखों में रिस्पेक्ट होती थी कि भाई 10वीं क्लास का लड़का आया, 6 फुट 1-2 इंच का है, ठीक है, और अपने आप ही स्वेटर में ही दिख जाता था कि वाइड हूँ, क्योंकि पुशअप्स ले रहा था। इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वर्क ऑन हाउ यू लुक, impress them with your look, and then sell your product. This is what I want to say. Impress them and then sell your product. This is the tagline of the podcast. You know, I want to ask you कि अभी अपने करंट वर्कआउट स्केड्यूल के बारे में हमें बताओ, अपने करंट स्प्लिट के बारे में हमें बताओ। So I think first I'd say is the gym split, जो ये सब बहुत फेमस हो रही है जिमों में कि भाई you have to do this back, this leg, this back, this that. I used to do it for a very long time. I left it. I keep trying new things, but calisthenics से शुरू किया. Then I started off weightlifting. Then I left weightlifting, and I was like सिर्फ calisthenics करने वापस आ जाऊंगा. Then for roadies I had to do something. You know, like I did modeling also 2018 में. सो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि अगर तुझे थोड़ा सा सुंदर लगना है तो थोड़ा सा वेट्स उठा, क्योंकि बॉडी को प्रोपोर्शनेट कर तो अच्छा लगेगा स्टेज पे। सो ही पुश्ड मी, आई स्टार्टेड ऑफ डूइंग इट, एंड नाउ दैट आई फील दैट द स्प्लिट शुड बी ऑफ एवरीथिंग, यू नो, लाइक मेरे हेड में क्या, आई हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ साइबरट्रक, इज बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अभी आजकल के जमाने में हाईरॉक्स वगैरह फेमस हो रहा, लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू डू हाईरॉक्स, एवरीबॉडी वांट्स टू डू दिस रेस दैट रेस, but are you prepared for that? Are you ready for it? So do you prepare for it for 3 months? You know, okay, how that is the real fitness. So in the morning, I like to do fasted cardio. Fasted, भूखे पेट ही करूँगा कॉफी पी के, मेरे को समझ ही तब आता है। Either I would run for 3-4 kilometers, just small jog, लंबा, or either I'll do some short sprints, कि भाई चढ़ाई पे भाग लिया, या either I'll do athletic drills सुबह, or either I'll do boxing or kickboxing in the morning. That is something which is very exhausting for my nervous system. मैं हमेशा वो चूज करता हूँ सुबह खाली पेट। उसके बाद मैंने अपने आप को इतना हरा लिया दिमाग से, इतना ज्यादा थका दिया, उसके बाद I'll have like प्रोटीन शेक, एंड उसके बाद अब मेरा दिन स्टार्ट है, क्योंकि अब मुझे मेरे वर्कआउट ने हम्बल कर दिया। तो अब चाहे मुझे किसी से मिलना हो, कुछ भी करना हो, I'll always have this smile, have a charisma. सब लोग ये बोलते हैं कि भाई आप इतने अच्छे से मिलती हो, और स्क्रीन पे आपने, जैसे अभी पीछे एक शो था उसमें लड़ाई वड़ाई हो गई थी, एंड लाइक भाई आप बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो, आपको गुस्सा नहीं आता, ऐसे नहीं आता, बट आई एम
more of a guy who would want to exhaust myself through workouts and be open and humble to what life throws at you. मैं किसी से मिल रहा हूँ, बहुत अच्छे से मिलूंगा. I think you will hurt you know मैं किसी से भी मिलूं, I'll meet them in a way that they don't know me, they have to know me. जो देखा सोचा समझा, you always have this नोशंस, प्रीकंसीव नोशंस रहते हैं. हाँ. हाँ, मुझे ये नहीं है कि भाई मुझे किसी से मिलना है तो मुझे उनको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ. नहीं, अभी सुन लो, अभी बता देता हूँ क्या हो गया. Because I'm already humbled by my workout so much in the morning that I'm now ready for it. Like cold plunge वगैरह सुबह ली, उसमें से उसके बाद you start off your day. And evening workouts are light workouts where I'm doing like pull-ups, dips, push-ups, gym workouts. That is my wind down workout. Right. So I have to train 2 times in a day. Okay, not. Otherwise, I would have that energy. I would have that still, you know. Tell you a small story. Oberoi mein na, they used to make us work 14 hours. Easy. In a day. In a day. Easy. 14 hours. And hotel managements are very hectic, you know. Everybody, you know, like, उससे मुझे बहुत सीखने को ये मिला कि मैं उन लोगों से डिफरेंट कैसे था कि जब मैं घर आ रहा था ना, I would sleep on the bed. I would be like, do I deserve this bed right now? I don't. I'm not yet tired. I'll wake up, I'll do push-ups. I'll finish off with a workout. I'll have it. कितना भी मुश्किल था 14 घंटे की शिफ्ट मैंने ट्रेन किया और फिर मैं सोया. So all of these trainings, you know, like teach me something or the other thing that even if you are going to your bed, ask yourself this question. ये मत सोचो कि मैं दिन को रिवाइंड करूंगा कि मैंने अपने दिन में क्या किया, अब मैंने कल क्या करना है. नहीं, सिर्फ एक ही सवाल करो अपने आप से कि क्या ये बेड को मैं डिजर्व करता हूँ. कितनी पब्लिक है जो रोडों पे सो रही है, उसने कितना काम करा, वो है हार्ड वर्क. तूने क्या किया? तू फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तू उठा अपना आराम से 10 बजे, तूने अपनी मील प्रेप, फिर तू जिम चला गया, 4 वीडियो बना ली, वापस आ गया है. तूने 4 एडिट कर ली, सौंज हो गई, शाम हो गई. फिर आप अपना करके रिलैक्स करके 2-4 लोगों से मिला, 2-4 रील और स्क्रॉल कर ली, थोड़ा सा गेम खेल लिया, आप सो गई. ये हार्ड वर्क है. उनके खिलाफ 4 घंटे वर्कआउट करना हार्ड वर्क है. I learned from Arnold that even if he was working out 5 hours a day, he was doing his acting classes, he was doing his वो तलवार चलाने वाली, he was doing his vocabulary, English भी सीखनी थी. 100 चीजें वो आदमी कर रहा है उस दिन में, and then he's yet not calling himself self-made or hard work. Who are you? Who am I? It's not hard work. Hard work is when अगली रोटी नहीं पता आपको कैसे कमाई जाएगी. Hard work is जब 9 बजे आप वहाँ पे खड़े हो ना चौक पे, आपको ट्रैक्टर में लोग भर के ले जा रहे हैं, आपको पता है अगर आज गए तो ठीक है, कब खा लेंगे रात को, नहीं गए तो फिर बेरोजगारी है. वो है हार्ड वर्क. और हार्ड वर्क की डेफिनेशन आजकल सोशल मीडिया पे उल्टी ही चल रही है. हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क. वर्क, दिस इज योर वर्क, यू हैव टू वर्क. सो आई वाज ऑलवेज लाइक, डू आई डिजर्व दिस बेड व्हेन सो मेनी पीपल आर स्लीपिंग ऑन द रोड? डू आई डिजर्व इट? अपने आप आपको एक वो फील होगा कि नहीं यार, थोड़ा और कर लेता, कोई बात नहीं करा, अभी कर, वरना सो जा, कल और कर अच्छे से. That's what pushes you the next day. Yeah, that's next day. Every day I'm like, और कर लेता, आज और कर लेता, आज और कर लेता. So you sleep with that mindset, you wake up, okay, oh shit, कल रात को भी लगाया नहीं करना है, let's go, you're on. You wake up, you're on. Wake up, ऐसे सुबह उठ के ही नहीं सोचना कि आज ये कर लूंगा, आज ऐसे करना है, वैसे करना है. Already भाई अब करना है, जो भी हो. So that was what I was always asking myself, okay, do I deserve this bed right now? And it answered every question for me. You know, I want to ask you कि अपने डेली डाइट के बारे में हमें जरा बताओ. स्टार्टिंग फॉर द डे टिल एंड ऑफ द डे कितने मील्स होते हैं? जस्ट ब्रेक देम डाउन अ लिटिल फॉर अस. I think I would tell you that only one heavy meal is what I eat. Okay. One heavy meal, और जैसे सब लोग बोलते हैं एक meal a day और ये सब कुछ नहीं है. What I do is I try to be hungry most of the time to teach myself mentally कि क्या है कि सबसे बड़ा डर फिटनेस इंडस्ट्री में ये है कि भाई अगर मैंने आज पूरा खाना नहीं खाया तो कल मसल बनेगी नहीं. ठीक है, अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो आप ऐसे करो. बट हमारा यूथ इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ट्रेन वो बॉडी बिल्डरों की तरह कर रहे हैं, डाइट भी बॉडी बिल्डरों की तरह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट वो बॉडी बिल्डर नहीं है. टू बी अ बॉडी बिल्डर टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, ईटिंग accordingly, and then taking chemicals and steroids. They are just wanting to look good, eat good, be fit, and doing these habits of bodybuilding. So I would say कि bodybuilders वाला split छोड़ दो. That's a whole profession, different profession. मत जाओ उसमें. Get into something
which is called fitness. So I like to stay hungry because of that. I would, because I'm not a bodybuilder, so I don't care about कि अगर आज मैंने protein नहीं खाया नहीं खाया. So I would wake up, empty stomach, coffee, then go back to my protein shake. And वैसे अगर मेरा मन किया तो मैं थोड़ा से बादाम और काजू ले लूँगा after that workout. नहीं करा तो नहीं लूँगा, सिर्फ प्रोटीन पी लिया. I'm sorted. I'm ready, you know. डे टाइम में. Date around 9 o'clock, 10 o'clock. Right, Because right. तब तक सुबह. मेरा workout खत्म हो जाता. करेक्ट. 12:30, 1 o'clock, I'll just take a huge meal where I'm eating rice, दाल की जगह कभी राजमा, कभी छोले, कभी काली वाली दाल, कभी ये वाली, कभी वो वाली, माँ की ये वाली, all dals. Like एक माँ की दाल भी होती है. So all of these dals with rice, as salad. I'm enjoying this with my curd. मैं मम्मी का बनाया हुआ अचार भी खा रहा हूँ और मैं ये मील enjoy करता हूँ. ये lunch है मेरा. I sit with my mother. That is one lunch that I cannot say no to. I would eat everything. And then I would stay, you know, like 3 hours hungry. By 4, I'll do my next workout. Coffee, I'll take a coffee or some pre and just और वर्कआउट के बाद workout I'll do for 3 hours, maybe 6:30, 7 o'clock. Come back, I'll take like a shake. And some boiled vegetable that my mom makes, you know, like लौकी को chop करके लौकी को you just put that jeera, थोड़ा सा देसी घी लगा के you cook it in normal salt. So sometimes I'm eating that लौकी, sometimes I'm eating tori, sometimes I'm eating कभी मैं वो खा रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं, zucchini. कभी मैं green वाली zucchini खा रहा हूँ. And that's dinner for me. After that, I don't eat anything. So you follow vegetarian diet? Most of my diet is vegetarian, but I do eat chicken and but more than chicken, I would love mutton actually. अच्छा. I'm a red meat fanatic. So बट नॉट अ डेली थिंग क्योंकि Not आपने daily. इसको मेंशन नहीं किया. ना मैं eggs लेता हूँ every day, ना मैं chicken लेता हूँ. और अभी सर्दियाँ चल रही है, I would probably have like a fish maybe twice in a week. And this is what I'm eating every day. राइट. And I do not focus on any diet more, but I would love to be hungry most of the time. Because अगर मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ ना, तो मैं I would be like ना कुछ आ रहा है, कुछ खा रहे, ना can't do that because I want to be sharp all the time. Like वो फूड का ब्रेन फॉग एंड ऑल आपको नहीं चाहिए. yeah, like I would do injustice to you. Like I would eat food and I'm like here and Korak is like, bro, he ate so much and then now he can't talk and now he's full. What would Korak want more? Our hungry Rishabh or full fed Rishabh? कंप्लीटली एनर्जाइज्ड ऋषभ, Yes. व्हिच तो आई एम गेसिंग आप हमेशा रहती है. Yes. Energy will come from hunger. I swear to God. Food will only satisfy your workout needs and make you feel sleepy. चलिए. So I'm guessing your daily protein intake is mostly coming from the protein shakes, right? Mostly, yeah, protein shakes, I think. Okay. And dal, I think. Dal I eat a lot. That is more than white rice. I would love white rice, but more than white rice, I'm going to focus on dal. It'll be like a soupy noodle thing. Right. Right. It'll be more of the soup of dal than. And sometimes if I'm not eating the veggies, I'm going to drink a whole boiled dal, blend it. Like a big mug I have. I love that. चलिए, गुड. आर यू लाइक आप खाना, बट आई एम गेसिंग क्योंकि आप माँ के हाथ का खाना इतने प्यार से खाते हो, सो आई एम गेसिंग यू डोंट जस्ट ईट इट थिंकिंग इट्स फ्यूल. टेस्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. Taste is very important, yeah. चलिए. I can't do. Okay, night meal is something that I want to always sleep a little hungry. वैलिड. सेम. Sleep a little hungry. लाइट खाना चाहिए. Yeah. थोड़ा सा. Okay, मैं अपने आप से ही मेरे को ना satisfaction नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा खा लूँ. And I would just eat light, go to bed because उससे पहले भी I stretch before I sleep. So I can't eat heavy and then stretch after like 30 minutes after. I have a whole routine set. ओके. चलो ऋषभ, बिकॉज यू सेड कि आप फूडी भी हो, आपके लिए टेस्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाई जनरली आपका रूल रहता है टू स्टे हंग्री ऑल द टाइम. But we are going to break that norm a little bit. So Nutribay has a latest launch. It's one of our very prime products जो launch हुआ है. लेकिन कौन सा product launch हुआ है ये हम आपको बताएंगे नहीं. We have a special line ready here. Special line of products ready here जो हमारे team member जय लेकर आए हैं. And we've never done this before. Live podcast पे we are going to do some live testing and then get Rishabh's live reaction. So yes. कर सकते हैं? Whichever Because I you, think it's protein only, yeah. whichever you wanna, whichever looks more appealing to you, Hmm. please taste and tell us कैसा लग रहा है. अच्छा.
What do you think the flavor is? I think this is chocolate brownie or fudge or something like that. Chocolate brownie fudge. Interesting guess. अगर आपको पूछा जाए to rate the flavor out of 10. One more sip for that. बिल्कुल. I'm getting a oats vibe also from this. A little bit of oats. Of a muesli kind, but more of chocolate fudge. I would rate 9.2 out of 10. 9.2 out of 10 for the flavor? Yeah. Not bad. Mixability? Yeah, mixability is more. That's why I chose this first. Okay. And all of this have a little bit particles on top. Achha. Therefore, it made me like. चलिए, let's get the full glass of water so that थोड़ा palate cleanse हो जाए भाई का. चलिए, let's have the full glass of water and then we'll check the second glass as well. दोनों में से whichever you want to try first. I think one looks a little brownish, one is a little whitish. Yeah. Because I'm like the HM guy. I've tasted a lot of wines. Yeah? Wine tasting. Sadly, wine tasting is not happening here. This is a protein tasting. Yes. What do you think? What flavor? So I think this is hazelnut. Hazelnut. Okay. Rate the flavor out of 10. Yeah, it's good. Like I would rate this more than the first one, 9.5. Not bad. To be honest, even I like this one more than the chocolate. That's why I took the third sip. Teen tikka kaam bigada. Chalo. Now we only have the middle one left. Let's have some water first. Palate check. Palate cleanse bolte hain isko. Yeah. What do you think? What flavor? This is coffee because I love coffee. So it feels like cold coffee, I guess, but it has a little bit coffee vibe also, chocolate vibe to it. Okay. Rate the flavor out of 10. Even though I'm a huge coffee fanatic, but I would still rate this lesser than both of them, 8.5. Okay. Even though I'm a coffee fanatic. All right. So, but one thing is common in all of these is that they're thicker. Is in a good way or a bad way? In a good way, because makes you feel fuller, I think. पीने के बाद you feel that you drank something. And sometimes ऐसा लगता है कि कुछ पानी सा कुछ flavor घोल दिया. जैसे I can't have these veg proteins. What are you क्या कहते हैं? Plant proteins. क्योंकि वो बहुत creamy नहीं हो. बिल्कुल ही basic water में होते हैं. बहुत लोग नहीं भी पी पाते. Yeah, but I would drink more the hazelnut. It's good. And it's thicker and feels dense. Chaliye. In a good way. But I have to tell you that you just said कि plant protein आपको पसंद नहीं because texture अच्छा नहीं होता है, grainy होता है, कभी-कभी बड़ा light रहता है. What you just tasted all of is actually NutriBase's latest, the NutriBase Gold Pea Protein. Yeah. This is pea protein, completely lactose का अगर आपको problem है तो you can easily consume. This is a plant protein, pea protein. And the best thing about this... Damn, brother. Seriously, man. I would never imagine like the plant proteins taste this because I've tasted them. Yet, I have to very honestly tell you that जब हमारे यहाँ tasting sessions हो रहे थे, a good 2 months before the launch. So I'm a hardcore whey guy. I love my whey protein. जब पहली बार मैंने इसे टेस्ट किया था, even I couldn't guess at all कि ये pea protein है, because it was tasting and the texture was so better and so close to whey protein. Yeah, so it's been I don't know, it's thick and creamier and. और इसकी best बात ये है कि it has all the 9 essential amino acids for muscle building. So it's a complete meal, yeah. Complete meal, complete protein source. Last question, if one has to ask you to guess इसके 1 kg डब्बे का price. Plant proteins are costly a little bit, I think. I'll give you a hint because I like bro so much. थोड़ा opposite. Whey से कम होता है. अच्छा, whey से कम होगा. So I think 1 kg would be around between 1500 to 2500. Bro के body से ही पता चलता है कि bang on. लेकिन उससे थोड़ा कम है. It's 1499. I think it's good, yeah, because बहुत vegetarians, they get confused what to eat, lactose plus all of that jazz.
The salts did. The hazelnut is tasty. Chalo, I'll tell you the actual flavors also. Hmm. The one that you like the most, the one that you rated 9.5, and you're Not calling it French. hazelnut. It's actually French vanilla. Okay. Yes, that one is French vanilla that you gave 9.5. The chocolate that you gave 9.2 is rich chocolate creme. I guess it's right. Eh? You guessed it right, completely right. And the beach wala, you guessed it bang on, it's cold coffee. Cool. The one that you gave 8.5. So that means I'm a hazelnut fanatic, but this is a French vanilla. Hmm. Cool. All right, chaliye, let's get, or should we keep the glasses there? Yeah, we can keep the glasses. Perfect. Intake. ताकि आप पीते रहो बिंदास. Yeah. You know, I want to ask you, K, I have seen your training videos with your clients and I thoroughly enjoyed them Yeah. because you actually push them. Yeah. You push them in a way जिसकी उन्हें जरूरत है. Yeah. There are so many videos आजकल social media पे जो viral होते हैं where trainers they push, but वो push कभी-कभी थोड़ा almost violent दिखने लगता है. Almost violent. Yeah, so there's that side and there is that side of PTs who are just yes sir, yes ma'am, yes ma'am. हाँ, 4 lat pull downs काफी, कोई बात नहीं, 5वां मत कीजिए. Because these are well-fed lions. These are people who are charging bombs for the PT and they're acting as if कोई fancy exercise आज करा देता हूँ तो शायद he'll know कि यार fancy trainer bro. Correct. Kettlebell swing अलग तरीके से बता दी bro. He's like, been there, you know, like I know what they do. The only thing our trainer's job today should focus आज के time में. Not getting out the fancy diet, not getting out the fancy training thing. यार fancy training के चक्कर में injury भी हो सकती है. तो तुम basic कराओ. उन्हें सबसे पहले सीधी बात बोल दो कि if I'm asking for so much money from you, it's not because of my trainings. It's because I will get you there. मैं physics का teacher हूँ. ठीक है? Imagine class में. मैं खुद तो PhD नहीं करी, but मैं तुझे PhD बना दूंगा. ये फर्क है. Getting him there is because वहाँ बोलना ऐसे violent हो जाना, धक्के से करवाना, ऐसे केस में इंजरी हो सकती है. But what my idea is to get that mindset, get that craziness out of him without harming him, without making him realize कि उसने ये कर दिया. अभी मेरी एक recent video में I was training with Arpit and I asked him, भाई how much do you think you're gonna wanna go? और फिर उसने कुछ ऐसा वेट बता दिया, भाई मैं इतना ही करता हूँ. And करने के बाद he was like, भाई और कर लेता. Exactly. Because मैंने उसको इतना ज़्यादा उस लेवल तक पहुंचा दिया. मैंने कहा अब तूने 5 बोला तो 7 करेगा. अब उसको ये है कि 7 तो करने ही पड़ेंगे. और जब वो 7 कर चुका है ना, मैं उसके कान में ही बोल चुका हूँ कि तू 7 तक लिमिट कर चुका है. क्या ब्रेक करेगा उसको? Need as 8. कराने हैं 8 ही. Imagine that's how you. कोई teacher कोई thing, they are hardly the highest paid teachers, but yet they're gonna get you a highest paid job in corporate. How they do it is the thing. So no crazy fanatic new exercise, new gym, new diets, fancy. जैसे बॉलीवुड में हो जाता ना कि आजकल पिलाटेस वगैरह भी fancy तरीके से कर रहे हैं सब लोग. So nothing fancy can get you there. The only thing that you have to help him unleash is the demon inside him. That question, why he came to you, why he's paying you that much money. Yeah, that is what. But if anybody who's going to buy a Lamborghini is not buying Lamborghini because it's Lamborghini. They are buying Lamborghinis because when they sit in Lamborghini, they'll know who they are. People will know who they are. So don't go for fancy training just because ये थोड़ा सा आज अलग करा देता है. जिम में ये सबसे अलग करा रहा है. ये सबसे fancy exercise है. Let me take PT from it. No. जो बंदा आपको genuinely push करे, आपकी body को understand करे, आपको mindset को समझे, go for that. You know, you mentioned कि you spoke about the simplicity also. Even now, वो fancy workouts के जगह आप consistently जब simplicity पे focus करते हो, Basic. both the basics in terms of workout also, in terms of diet also. अभी very recently एक controversy आया था, where one particular brand, उनके eggs में ऐसे elements निकल रहे थे which can lead to cancer. So and this created an entire harakiri कि भाई अब तो अंडे भी नहीं खा सकते and everything, जबकि problem सिर्फ एक ही brand से निकला था. So your take on that, this entire controversy, what do you have to say? I think problem पता है क्या है? Problem हमारे इंडिया में ये है कि population बहुत ज़्यादा है. Feed करना मुश्किल है. So everybody wants to go to a thing where they can, like manufacture more, you know. It's the volume. Yeah. And then some will be like,
नॉर्मल अंडे बन रहे हैं, but then they're gonna package it in a way where it shows, ओ भाई इतना प्रोटीन है, इस अंडे को और ज़्यादा ऐसे कर दिया, मुर्गी को ये करा दिया, मुर्गी को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जबकि मुर्गी बेचारी कुछ खा भी नहीं रही होगी और बल्ब जला जला के तुम उससे अंडे निकाल रहे हो, है ना? तो अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्टर वेयर दे हैव टू फीड सो मेनी पीपल एंड नथिंग इन दिस इज ऑल फ्रेश, नथिंग, वरना आपने बैकयार्ड में बना लिया हो। और इस सिनेरियो से आप निकल ही नहीं सकते जब आपको लगे कि इसलिए नहीं है कि मैंने अंडे इस तरीके से छोड़े और मैं नॉन वेज डाइट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, बट आई थिंक ईटिंग एग्स फ्रॉम अ नोन सोर्स इज इम्पोर्टेंट। यू आर बाइंग मिल्क, अब इतने लोगों ने मिल्क डोर स्टेप पे छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स, दूध के ब्रांड है, हमारी तो जी गाय ऐसी है, हमारा तो A1 है, हमारा ऐसे, हमने उसको बाहर से लाए हैं, उसके वो बच्चे को अमेरिका से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, ये वाली गाय है, हमारी गाय के नीचे वो हमने उसको ब्रांड कर रखा है, ये वो गाय है, ये ऐसी है, ये ग्रास फेड, दिस दैट, हैप्पी एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दैट। अब कुछ टाइम के बाद अगर उस दूध में से भी कुछ निकल गया फिर क्या करो? सो गो टू द ट्रस्टेड सोर्स बैक अगेन, जिन्हों के खुद घरों में गाय हैं, लोग जो दूध दे रहे हैं, check, you know, go back to nature if you can, because nobody is going to help you, because जो भी बन रहे हैं वो बल्क के लिए बन रहे हैं, इसलिए भी हम चाहे कितनी भी डाइट कर लें तो मुश्किल ही रहता है to get the clean diet. You know, That's why I was telling everybody to buy supplements from outside, from overseas. from overseas. That's why I was telling everybody to buy supplements from overseas, because जो यहाँ पे भी बन रहे हैं, they are like that. And the protein I want to market which is sourced from outside or then manufactured here. So like this, what you're doing, you've done such a good job for these people who can't have lactose and whey and this and it's really tasty, and I'm still sipping for a reason. Please, let's get some more French vanilla made shoot के बाद. Yes, as proper shake also. And I think इसको थोड़ा सा वक्त हो गया था. I think it might not be as cold. No, I actually would like room temperature. Normal temperature. हाँ, वैसे भी काफी सर्दी है यार. चलो, I want to ask you कि आप ट्रेनिंग, मतलब by that I mean खुद तो आप ट्रेनिंग 17 साल से कर रहे हो, but as a PT, as a trainer, as a coach आप कब से कर रहे हो? Started off 2018 is when I. So a good 2018, yeah. 2026 आने वाला है. So a good 7-8 years now. 7-8 years. 7-8 years. I want to ask you कि जब नए क्लाइंट आपके पास आते हैं, सोचिए, and doesn't even have to be a youngster, a newcomer, when they come to you and they tell you their desires के ऐसा बनना है या ऐसा बनना है, ये मेरे goals है. Have you come across one or two myths जो maximum newcomers के जहन में सबसे पहले से बैठा हुआ है? I'll tell you what problem पता क्या है? Most of my clients are either they've been injured or they are really old. Okay. Who really understand the significance of a personal trainer. Who really understand why you need a personal trainer or why you need this, or now I'm injured, what do I do? How do I train? Because I will not give you fancy workouts. I'll be the one who will give you the blunt truth. Right. Like ठीक है, ये हो सकता है, but ये ऐसे ही करेंगे. कुछ कभी ऐसा होगा कि I'll give you boring workouts, but that'll take you somewhere. कभी ऐसा होगा कि I'll not listen to you, not give you fancy. सर ये मत करो, ये चेंज कर दो. आज ये मन नहीं है, ये नहीं कर सकते. आज वो मेरा मन नहीं है ऐसे बैठ के करने का, तो मुझे कोई एक्सरसाइज बता दो जो मैं ऐसे खड़े हुए करूँ. नहीं. I'll be bluntly honest with you from the start. And मेरे पास जितने भी ज़्यादातर clients हैं वो सारे वैसे ही होते हैं. Either they've gotten injured from some sports or they are a little bit matured. They know कि हाँ, you need to have a specialist for training. So the craziest myths I have come across is, सर डाइट दे दो अच्छे से ना, मैं वर्कआउट आपका करते रही हूँ. वर्कआउट आप क्या? आपका वर्कआउट करते रही हूँ. हाँ, आपका बनाया हुआ वर्कआउट करता रहा हूँ. हाँ. मुझे ना डाइट बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू नो लाइक एवरीबॉडी इज mostly fond of diets more than the workouts. So now if I'm the guy who is not giving out crazy diets, ये macros ऐसे नाप लेना वैसे नाप लेना, उन्हें लगता है कि भाई अगर मैं नाप के नहीं खा रहा तो थोड़ा सा ना, मैं अपने दोस्तों में कैसे बताऊंगा, bro I weigh my food brother. Well, like they'll look at you कि तो भाई तुमने तो ज़्यादा ध्यान से, do you calculate macros?
Do you see your watch? Do you train? Calculate, bro. I'm training these many calories, and my heart rate, my seating heart rate is this, that. 1,000 things they want to show off in social, on socialize like that. And if I give them a diet, bhai, ek kaam kar. In the morning you're just gonna have coffee, and then after that you're gonna get salad, and then you're gonna eat lunch a little bit, and then you'll not eat anything till the next day. And it's like the craziest thing, because उसमें कोई fancy oat meal का चीला नहीं है, इसमें कोई brown bread नहीं है fancy, इसमें कोई, bro, are you telling me you have white rice? But sir, brown rice. Quinoa. हाँ sir. अब oats का सर चीला खा लेते हैं, like कुछ तो खाने. Nah bro, just stay hungry, because what you need right now is, I'll give you a short example. कार का एवरेज कैसे निकालोगे? धीरे चलाओगे, तरीके से चलाओगे, ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करोगे, टाइम पे गियर चेंज करोगे, ठीक है, तभी तो ज्यादा फ्यूल बचेगा. यही तू करता आ रहा अब तक, तू बस फ्यूल डाल रहा और चला रहा, फ्यूल डाल रहा और चला रहा. व्हाट यू नीड टू ईट, तुम अब 20 साल से तुम खाते हुए आ रहे हो, एक बार मेरे पास आते हो, यू वांट रिजल्ट्स इन 3 months, 6 months, 8 months, 1 year, और जो फिर भी योर बॉडी सो रिजिलेंट, विल गिव यू रिजल्ट्स in 1 year. Yeah. But are you having that much of patience level in today's world? मैं आपको बताता हूँ अर्श भाई की बात. 6-8 महीने पहले जब रोडी स्टार्ट हुआ था, तो भाई इज लाइक ऐसे ऐसे करो आप, पहले 5 सेकंड की रील के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है हुक. 6 महीने बाद भाई 5 नहीं 3 सेकंड का बहुत अच्छा एक हुक बना के चलो हर रील पे. अब यू नो व्हाट ही सेज, पहला सेकंड भी नहीं, पहला फ्रेम. वो फ्रेम भी मिली सेकंड का होता है, क्योंकि एडिटर कह रहा है वो फास्ट नहीं होगी तो मजा नहीं आया. ट्रू. तो इमेजिन दैट मच ऑफ पेशेंस लेवल दिस जनरेशन is left as this generation. Yeah. And it's not just a this generation thing anymore. आजकल so many parents आधा टाइम फोन पे रहता है, उनका भी सेम अटेंशन स्पैन उतना ही बचा है. And this phone is so strong and it's so bold. हमें लगता है कि हम फोन चला रहे हैं, फोन हमें चला रहा है. सो उल्टा है. सो ट्रू. हमें लगता है कि हम चला रहे हैं इस फोन को, फोन हमें चला रहा है. फोन को वो ही चीज तुझे बेचनी है जो तुझे लग रहा है कि तू खरीद सकता नहीं कर सकता. Then if I talk to you right now about some shoe that I want, oh yeah, it's gonna do that same thing. Immediately now, ads आने लगे. Now imagine you see one reel about some guy, this that. Now it knows that you like scary reels. Your phone knows more about you than you know about sometimes you yourself. Exactly. So try to find yourself more. Get okay, ठीक है, you cannot run away from phone. सारा काम फोन से, मैं भी फोन पे देखता हूँ, काम है हमारा, ठीक है. But start of the day, know what you really want to do in that day. Don't go for the reels, because starting of the day, if you get up and you're on your WCN washroom and you're like yeah, then you forget, oh shit, मैं 20 मिनट से बैठा हूँ, मेरे लाते सुन है. मैं उठूँ कैसे, मुझे कुछ पकड़ना पड़ेगा. अब मैं लाते सुनोगे, then you realize और बहुत ज्यादा रील देख ली, बंद करो. तो इतना ज्यादा अटेंशन स्पैन तुमने वहां खत्म कर लिया. सारे डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? आई एम लुकिंग एट माय फोन, रील्स. डिसीजन मेकिंग पता कहाँ है? Do I really want to watch this reel right now? True. Oh shit, this reel. Oh shit, वहां पे आग लग गई. And then, oh shit, yeah, this guy does this thing. He's always selling this product. Oh my god. That switch. This is decision making. इन्हीं एसेंशियल डिसीजन मेकिंग इनिशियली तुमने जीरो कर दिया सिर्फ फोन देख के. उसके बाद तुम्हें क्रिएटिव क्या आइडिया आएगा, तुम अपनी जॉब पे क्या एक्सेल कर पाओगे, तुम अपने बिजनेस को आगे क्या बढ़ाओगे. Anything and everything matters, like is what I'm coming back to is control your phone than it controls you. Control your time than it can soak you in. Get that real thing out. It's very good advice. और ये सबको, not just youngsters, everybody should listen to this advice. अपना screen time कम करने की कोशिश कीजिए. बाकी पढ़िए, workout कीजिए, कुछ ना कुछ तो करिए. Yeah. That's why, like, don't go for the fancy stuff. Always go for the thing which is, like, simple चीजों के साथ consistency, right? Yeah. I want to ask you, have there been, because आप 17 साल से workout कर रहे हो, and results आपके सामने हैं, have there been any sacrifices that you have done to maintain this lifestyle? Sacrifices, I would not consider them sacrifices, because जब सब लोगों को मैं स्कूल या कॉलेजेस में आज भी देखता हूँ, उनको ही लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं पहन लूँ, या कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं कर लूँ, जो ऐसी चीज़ हो मैं अपने साथ रखूँ जिससे मैं डिफाइन हूँ. Like a fancy watch, okay. Or the latest iPhone. I have orange iPhone 17. मैं 8 घंटे लाइन में रह के मैंने immediately खरीद लिया. Yeah.
and you have something to talk about because you're empty inside. You're so empty inside that you want the materials on you to talk. You want the materials to give you a personality. Yeah. और मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि okay, what can I do if I have to enter a room and I'm naked, okay? Suppose हमारे अब लाइफ में हम ये सारे वॉचेस और ये सब हटा देते, कपड़े भी हटा देते, सब हटा देते हैं. अब आपके और मेरे में डिफरेंस क्या रहेगा? अब ना कोई फैंसी वॉच है, ना कोई गाड़ी की चाबी, इसमें मैं आया हूँ, सब चल रहे हैं. तब क्या? Your mind and your body will put you out, will make you stand out. तो मेरे को हमेशा से ये था कि मैं कभी भी कहीं भी जाऊँ, I have to stand out. तो I knew कि अगर मैं जैसे I took this Arnold's dialogue in this movie Pumping Iron so much to my like मैं अपने जहन में उस चीज को इतना बिठा चुका हूँ कि discipline comes natural, sacrifices of food comes natural, because if I eat like everyone, I look like everyone. And I'll be like everyone. He says the same thing. Yeah. That's where it clicked in my head, like ठीक है, अगर सब लोग एक बार चीट मील करते हैं, मैं नहीं करूँगा. सब लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, मैं नहीं करूँगा. सब लोगों को ऐसे करना है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा. सो उसे उधर से ही मैंने चेंजेस लाने शुरू करे कि स्कूल में भी everybody was going to sleep, I was training. Everybody was almost waking up. I was morning में I would go run, play football or this that, or do gym, because मुझे पता था स्कूल में जिम बहुत कम लोग करते थे और जिम नहीं जाते थे. जिम ऐसी जगह थी जो, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा कि मैं शीशा तोड़ के जाता था क्योंकि अंदर की चाबी नहीं मिलती थी. चाबी किसको मिलेगी? जो सीनियर है क्लास 11 में. शीशा तोड़ के जाते थे? हाँ, तो मैं पत्थर फेंकता था, शीशा तोड़ता था, उसमें घुसता था पीछे से, एंड देन ट्रेन. जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, just hook it back out of the gym and go. Because class 11 12 लोगों को ही अलाउड था जिम करना स्कूल के अथॉरिटी से, and I would just break the door. मुझे पता है कि भाई स्कूल के अथॉरिटीज जब तक उस शीशे को फिक्स करेंगे 3 दिन मेरे निकल जाएगी. 3 दिन 4 दिन जितने भी. So जो छोटी सी बात है मेरे दिमाग में रही कि मैं ऐसे भी घुसा हूँ जिम में, हाइडिंग बिहाइंड इन अ रूम, बिकॉज मेरे कोच आ गए थे, वो अपना ट्रेन करके चले गए. हाइडिंग बिहाइंड फुल वर्कआउट, मैं छुपा हुआ था. फिर उसके बाद मैं निकला, अपना वर्कआउट खत्म किया, चला गया. दैट जिम was something that I always wanted to do different, always wanted to stand out different. किसी भी रूम में घुस जाऊं, मुझे हमेशा से अलग दिखने की वाली वो चुल थी. That is where these sacrifices, discipline came natural. Now it's not a sacrifice. I am happy because I am not like others. You know, like they are gonna laugh at me by how I am. I don't think they laugh anymore. No, they can just laugh at me behind my back, but I laugh at them because they are like that. There's a saying also. They laugh at you because you're not like them. True. And you laugh at them because they're everybody else. They're like everybody else. Yeah. You know, ये एक बड़ा कॉमन नोशन है और ऑलमोस्ट फैक्ट भी है कि लंबे लोगों के लिए मसल बिल्ड करना is very tough. is very tough. और आप काफी बचपन से ही आपकी हाइट बहुत अच्छी थी. So tell us about those initial years of weight training. Did you feel that? I was so, like I'll tell you, there were so many times that I would feel कि यार अभी मैं फोटो नहीं डालता क्योंकि मैं ऐसा लग नहीं रहा. अभी मैं ऐसे हाफ टी शर्ट नहीं पहनता क्योंकि मेरी दिख नहीं रही आर्म्स इतनी. मैं बारी बारी शीशे में देख रहा हूँ, like a very thin guy. I was very thin. I was like, अभी मेरे फोर आर्म्स like 12.5-13 इंच के हैं. इसका रिस्ट की साइज होता है. This was my arm, this was my arm size. And now I'm like, almost if I eat so much, I can get, मैं अभी पीछे जब ओडीज पे गया था मैं 115 किलो का था, तो उस टाइम पे 19-19.5 जस्ट कैरिंग नेचुरल. अभी तो थोड़ा सा कम कर लिया, अभी तो बिकॉज ऑफ वीडियोस वगैरह बनानी पड़ जाती हैं कि भाई यू हैव टू लुक एस्थेटिक इन अ वे. I was like, let's go towards the athleticism more, So therefore I learned like backflip and everything. So to get in that discipline, go to gymnasium now at this age, learn a backflip. घर वाले भी ये कह रहे हैं कि क्यों कर रहा है. So then, like I always wanted to be different, and this way, this made me feel okay that, yeah, I can do this. So that is where in school life, I did something different. When I went to college, I knew everybody is working 14 hours and they'll go sleep. I'll not go sleep. I'll train. थोड़ा सा मैं अलग से ही सबसे हटके चलता था. And now I feel that. तो आप जो कह रहे थे कि initially because of your height, which is माशाल्लाह कमाल 6.5, तो
कब से रिजल्ट्स दिखने लगे कि यार हाँ अब पहनता हूँ हाफ स्लीव, अब दिख रहे आर्म्स? After college, even after college, imagine it took me since class 8, I think 2008, and 2018 or 19, I was a little bit less worried how I am looking. And I was just because I was always a martial artist as well, you know, like I was into martial arts, so I was very secure in a way. I knew even if there's a guy who's like jagged, I'll put him down in seconds. Like I had that confidence that I know exactly where to hurt a person or finish him. So abs bhi hai us time pe sab aaya tha. I was like a little bit okay, but I would not still, you know, like I would feel कि थोड़ा और ज़्यादा होता. तो वो वाला factor, I think till 10 years, it took me 10 years. Wow. To get that thickness and maturity of that muscle. That's why you see my muscle is matured in a way, yet I look like a kid. So some people have to take steroids to, you know, like mature the muscle. Some people you see that they who take steroids, their skin becomes a little bit thinner, like paper thin, and they look matured. They look a little bit elder or older than the age, you know. So You're saying their skin ages faster. Age is faster, and their muscle ages faster. That's why they start to get droopy and all of that. They get less sleep. Everything goes off. That's what I always thought, that staying natural and it takes how much time it takes. Okay, go for it. I'm gonna be there because मैं तो इतना ज़्यादा patience है मेरे अंदर कि मैं अगर बैठ के I'll just watch कि एक प्लांट को ग्रो होता है वो देख सकता हूँ मैं कि पेशेंस है. तो मेरे को ये था कि I'll never be the guy who wants fast results. Like consistency, उस हथौड़े को उस हैमर में मारते रहो, कभी ना कभी वो नेल अंदर जाएगा and you feel that satisfaction कि ये हुआ मेरे से. So it took me 10 years to feel that confidence, and obviously लंबे लोगों के लिए it's very hard to get that muscle, then maturity, and then all of that thing. But मुझे ऐसा था कि इस हाइट को भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया. तो भाई सो ट्रू. ये एक 90% इंडियन मेन इसके आसपास भी नहीं होते. इमेजिन इतना बड़ा गिफ्ट दिया है और आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करो. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. You're gonna ask your father, I want this car. Okay. Keep after him, father, I need this car. Father, I need this car. He gives you this car. आप उस गाड़ी में बैठ गए, आपने पहले 2 महीने में रेड पीट दी उस गाड़ी की, सारे भाई लोग बैठा लिए, कभी कुछ ड्रिंक कर ली, कभी कहीं ले गए गाड़ी को, कभी ऑफ रोड बाढ़ दी, इतनी तेज चलाई कि कहीं स्क्रैच लग गया, कुछ लग गया. और जिस दिन आपको डैड को बिठाना हो गाड़ी में, वो बैठ के कहीं तूने ये कदर करी मेरी गिफ्ट की, स्मेल आ रही है इस गाड़ी में से, इसे साफ करवा, ये स्क्रैच कैसे लगा इसमें, 2 महीने हुए गाड़ी को, तूने ये कदर करी. He will never give you anything next. If he gives you, he'll have these insecurities. चला रहा धीरे चला रहा, रात को बाहर तो नहीं घूम रहा. So God is like that when he gives you something. And one final day जब आप वापस जाओगे उनके पास, वो एक सवाल अगर आप उस सवाल का जवाब दे पाओ, वो मैच्योरिटी है. लोगों को लगता है हम यहाँ आज प्रे करके भगवान से माफिया मांग लेंगे, व्रत रख लेंगे, ट्यूसडे नहीं खाएंगे, सैटरडे नहीं खाएंगे, बट जो गिफ्ट शरीर दे रखा है, जो गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट किसी को मिलता है भाई, 2 हाथ 2 पैर बहुतों पे नहीं होते, उसका तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो. सो आई ऑलवेज न्यू कि आई वाज गिफ्टेड विद दिस हाइट, टेक केयर ऑफ इट. एंड किसी दिन यू नो लाइक व्हेन आई गो बैक ही बी लाइक यार तू अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है. यू नो आजकल सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी बहुत चलती है, द नैटी वर्सेस फेक नैटी कंट्रोवर्सी. योर टेक ऑन इट? आई थिंक जितने भी बोल रहे हैं ना बारी बारी नैटी, और जिनको प्रूव करना पड़ता है नैटी है, वो नहीं है नैटी. आई थिंक बिकॉज व्हेन दे आर एम्प्टी इनसाइड दे स्पीक टू मच. एंड मेरे साथ कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि भाई एवरीबडी बी लाइक ठीक है यार तुमने कुछ तो लिया होगा, दैट्स व्हाई यू लाइक दिस. अच्छा, ऐसा सुनने को मिलता है? अरे समटाइम्स आई गेट मेरे को बॉडी मिलता होगा ही सुनने को. समटाइम्स कमेंट्स गेट, बट देन यू नो लाइक कुछ चीजें इन रियल लाइफ यू रियली अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई इट टुक मी सो मच टाइम. इतने साल लगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए. और मैं, आप मेरी हिस्ट्री भी चेक कर लो कि थ्रू माई इंस्टाग्राम यू विल सी मी ग्रो स्लोली. देयर इज नो स्ट्रेच मार्क्स ऑन मी. और ये जब भी आपने मेरी कोई वैसी पोस्ट देखी होगी, देयर इज नो स्ट्रेच मार्क्स हियर, बैक, स्टमक पे, एनीवेयर. व्हाई? बिकॉज मैंने नेचुरली उस बॉडी को धीरे धीरे बढ़ाया. अगर आप अननेचुरल वे से 3 महीने में 20 इंच का डोला कर लेते हो ना, तो उनका अगली लगता है. क्यों? क्योंकि स्किन खिंच चुकी है उस लेवल तक. एंड माई स्किन इज एज यू नो लाइक
natural, as healthy as it could be. I don't even wash my face with a chemical. It's like that. मैं बस आइस कर लेता हूँ, आइस वाले पानी में डाल के बाहर and then you are okay, good to go. So मैंने इस तरीके से रखा है कि you know, like, be it natty, fake natty, I think that is just people who are immature talk about it. And if you really want to know, come train with me someday. I would love to. फरीदाबाद ना? फरीदाबाद. आता हूँ मैं, मजा आएगा. You know, आपने MMA किया है, कैलिस्थेनिक्स किया है, वेट लिफ्टिंग तो आप करते ही हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, mixed martial arts. Of course, I mentioned MMA. Can you tell me like one thing that you learned from each of these sports? Football. Team sport, because you can never be alone and do something. True. That's why I keep telling my team that, you know, like, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम मेरे पीछे खड़े हो तो मैं ऐसा हूँ. अगर मैं अकेला कहीं भी जाऊँ, अकेला ही करता रहूँ, अकेला ही करूँ, then I'll be able to give that product which I want to give out. So I think team building and team effort is what I understood from football. Lovely. Basketball. Basketball, I think I understood that you need to be a little bit strong. क्योंकि जब मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था, तब उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बात समझ में आ रही थी कि धक्का दे के बॉल को बकेट में डालना है. सो आई वाज ऑलवेज कि भाई लाइफ में किसी को धक्का दे के हटा के ही आपकी जगह बनेगी. कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि ऋषभ भाई आ जाओ, बैठ रहो. नहीं, ऋषभ भाई बैठेंगे तो फिर वो अपनी जगह के लिए लड़ेंगे. सो टू बी either you can put on a brave face, okay, fake it till you make it types, or you have to make your own space, do it beat anything. Mixed martial arts. Humble. Humbles you down? Because a guy who's like only 85 kgs can put you down in a way you never imagined. I could be 110, but yet just one simple punch from somebody, from a boxer or mixed martial arts, can put you down and be like, अच्छा ये भी हो सकता था. Shit, you know, like, so कितने सारे सोशल मीडिया पे लोग हैं कि आजा देख ले, आजा भिड़ ले हमसे, हम देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे. बट रियल लाइफ, you know, like, जो लड़ सकते हैं वो नहीं बोलते ऐसे. True. वो उनको पता है कि वो कितने खतरनाक है. चलिए, we only have 2 questions left in the podcast. I want to ask you, how did life change after roadies? I think I'll tell you one thing, because I realized that I was always this guy who was always different. So I would walk into malls and restaurants and all of that, and back then anyone who would go with me would always be insecure. Ke, bhai, everybody's looking at him. What? Earlier there was like, who is this guy? Now they know who this guy is. That is the only difference I received. I would not go really mad about, oh, they're looking at me, they know me, I should, yeah, I have to be in a certain way. Nah, I don't feel that pressure at all, because I know it's going to increase more and more with time, and kuch aisa time bhi aayega, then I'll not be able to go outside in a way. But I know that nothing's going to change. I love this, because why am I being different? Why am I doing so much work on my self-discipline? Why? Because I want to stand out. And how do you stand out? Like this, you know, everybody's like, okay, yeah, this guy. I'm okay with it, you know. I'm a good guy. Some people would look at me and be shy, don't talk to me, because like sometimes I'm not smiling and I'm just walking past, but like, unko pata hai kaun hai, but they don't, you know, like. So the only difference I found out that earlier they was like, who's this guy? Now they know, he's that guy. That is the only difference I feel. And that guy will always work till he mentally satisfied. That's why I did not use the word success, because how will you call yourself successful when you keep wanting for more? When will Korak say that I'm successful now? Because Korak is always like, I want more. Absolutely. I want more. Then ऐसा क्या है कि खाना आता रहेगा, आप खाते रहोगे, भूख नहीं मर रही. So it's like that, you know. That's why I'm not saying I'll be successful. I'll be like, I'll be satisfied. And that satisfaction level will be multiplied. Let's see when. That was the podcast, except for one segment, but I have to tell you, itna zyada maza aaya. So much we got to hear from you, so many amazing insights. We're going to ask the viewers and of course our special guest as well कि podcast उनके लिए कैसा था. But before that, और before we started rolling, Rishabh told me कि इस segment से ये थोड़ा सा डरते हैं. Because this is the rapid fire. Rapid fire is very fiery. Yes, Rishabh is a storyteller. ये आपको पता चली गया होगा, उनको बातें करना अच्छा लगता है, which is always great for a podcast. Yeah. But for this, it has to be quick and rapid. Yeah, sorted. All right. Try my best. Yes.
चलिए, I know the answer to this, so I'm going to ask a second option of this. Okay. Any role model that inspired you a lot aside from Arnold Schwarzenegger? Cristiano Ronaldo. Oh, of course. Sue. Favorite muscle group to train? I think I would love to train biceps. One movie that inspired you to work out? Never back down. One cheat meal that you can eat every day and not get bored? Lamb curry that my father makes. यम मुंह में पानी आ गया मुझे. But उसमें तो अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाएगा. Yeah. But everybody's like, red meat, red meat. Screw you, macros, micros, guys. Biggest red flag in a gym crush? Biggest red flag, you know? Gym crush. Gym crush. Red flag. Can you skip this? Okay. अरे हाँ, भाई तो taken है ना? Yeah. Girlfriend भी है, of course. Yeah, I get like. Okay. Gym or combat sport? If you had to choose one. I'm gonna choose combat sports all the time because gym. If you train gym workouts every day, they're not gonna teach you anything. They're not gonna push you to heavy because mostly everybody is there to socialize and mostly you're trying to grab a workout with your bro because bro trains hard. He thinks he trains hard. Okay, I think combat sports will always keep you humble, down to earth, and keep you ready to take on the world because you never know what's coming tomorrow. Your biceps, chest will not see you. Solutions like Ozempic for weight loss. Your take? I think quick solutions never last long. So I think more than that, you should train your mind mentally rather than taking these substances and shortcuts. Yeah, shortcuts never get you there. Correct. So always go back to basic where you train in a way कि ठीक है यार, if you pile up maybe 300 to 350 workouts in a year, do it. Don't run away from it because patience will get you there. One, it'll teach you mental. Because I think what Olympic will do is give you fast result. You'll see, look yourself in the mirror. You will be happy. Once you stop it, it's going to get you depressed faster than not having results for 6 months. It's going to get you there faster because now you know, you've seen yourself lean already, can't go back to it. But आपकी habits अभी भी वही हैं. This thing will not change your habits. अभी क्या है कि you want to eat 3 cheat meals in a week and you're still doing it with this, it's going to help you. But once you stop this, you're taking these 3 cheat meals, brother. I don't even take 3 cheat meals in a month. Imagine when you have to come after me, what you're going to do. Nothing's going to save you. Your mindset is the same. The only thing that drug is done is it's going to help you faster. And it's never going to get you like a fighter, you know, like a fighter. It's you have to train for 12 months straight up, a whole year. You cannot be like, okay, I have this fight 4th month, I can train 3 months and get into the ring. You might win, might not. What if you get knocked out and you're done, your career is done? So always be ready for that fight, which can happen anytime. A fighter is always training since he's a kid, you know. True. One thing roadies did not show about you. The psychological, the depth of my character, you know. Like, it is not just about how strong I look and how good I perform the task. What comes behind it? What's behind the scene? What's because there's more to the Cybertruck than you know. So it's like it's behind the scene. If I'm able to perform that, because I remember Neha ma'am in one task she told, I know Rishabh is very calm, but I'm worried कि इतना ज़्यादा काम क्यों है? You know, तू ठीक है काम मत रहा है इस task में ऐसे करना वैसे करना. But you know, like in my head, because a fighter, when he goes to the ring, he's the calmest. He is in his zone and he's in a meditative state more than a person who is meditating under a tree, in his backyard, in his garden. He is in a more meditative state than you can imagine when he's fighting somebody, because if he's not, he's going to get hurt. He knows that. So I had that calmness in me, and ma'am would be like, oh, he's Rishabh, he's always calm, you know, this, that. Why he's calm is because he's like that. He's seen the hardships. He knows if he's not calm in this scenario, this situation, he'll lose. So being calm
being stoic is what I want, because आपकी life में कुछ भी होगा आपके साथ, तो you have to not react, overreact, or think, oh shit. Be calm, I mean, the problem will be solved. Problem का solution मिल जाएगा. नहीं होगा तो आप मर जाओगे. मरोगे क्या? एकदम खत्म हो जाओगे. उसके बाद की क्या टेंशन? मर गए तो क्या? मर गए तो गए ना. अब कौन है फिर ये? फिर मरे हुए को भी डेड बॉडी बोलते हैं, नाम से थोड़ा बुलाते हैं. मरे हुए को भी यही बोला जाता है कि डेड बॉडी को लेके जाना है. ट्रू. आइडेंटिटी खत्म हो जाती है. मरे हुए को डेड बॉडी बोलते हैं, तो फिर डेड बॉडी की टेंशन क्यों ना आती? एक दिन तो किसी सबने जाना ही है. So never be worried about it. So always stay calm in every scenario. If you're alive, then you can find a solution. I think that was a great advice there. If you're alive, then you can find a solution. Rishabh, thank you so much. बहुत ज़्यादा मज़ा आया hosting this podcast with you. Such amazing lines, amazing insights. How was it for you? I loved it because I love to, get back to the stories that I always, like every time even Harsh has done like so many podcasts with me. He knows every time he's going to listen to a podcast, he's going to learn something new about me. Yeah. Because I'm always going back into that. Because one thing I always notice in my life is I'm present in every moment, and I try to see details like in a very weird manner. So I would remember, okay, what can this teach me? Always one, what can this teach me? What can that be like? So I was always, like that. Therefore, maybe I love doing podcasts, is because I can then talk and, help you out. And sometimes I was learning about you as well, because when you ask questions and I know when you are thinking about the next question also, because I'm looking at you. Yeah. So I know that you have something to ask also, because that is what I love, having a good conversation. I hope you did not get bored. Not at all. Not at all. It was such an amazing conversation. Comments में लिख के हमें ज़रूर बताइए which were your favorite parts. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. And of course, for more such original content like this, don't forget to click that subscribe button. This is me, Korak, and Rishabh from Nutribay signing off. Cybertruck signs.